up well and you are getting my lecture proper. There may be a bit problem of, I think so, technical. There may be a bit technical problem. Tushar sir, are you getting me? So, yes, please. So make my laptop as the co-host, please. Because I want to have a bit screen sharing. So make my laptop as a co-host, please. Admin. Okay, ठीक है. So, what we have seen here in last lecture, we are with modern periodic table. Am I right? So, in last lecture, we have seen that electronic configuration being its very fundamental part, and which is needed here in periodic table. Now, last two lectures we have deployed for the electronic configuration. We are used for understanding the electronic configuration, which will help to understand this periodic table well. Those still who are lacking with the electronic configuration, 100% I'm sure that they will face difficulty for understanding this chapter. This is the beauty of science. ये साइंस की खासियत है. जितने हमें से लोग एक दूसरे चैप्टर को एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ सकते हैं, they will feel compared. अगर हम एक चैप्टर को दूसरे के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे चैप्टर में देख नहीं पाएंगे, उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो डिफिकल्टी तो है जरूर उसके अंदर की. So that's why, as I stated, in order to get this chapter well, periodic table, the knowledge of electronic configuration is very, very fundamental and most part here, and that's why we have used last two lectures to understand to get this electronic configuration well. And hope now most amongst you are comfortable with electronic configuration, and hence we can go smoothly through this periodic table. Already I have given the introduction what we have to discuss here in this periodic table. There are 118 elements in the nature and artificially as of now we are here. So total of the man-made and natural, there are 118 elements, and all these elements are very well classified in the periodic table. So when we start studying the chemistry, especially the inorganic chemistry, at that time, the knowledge of periodic table is must. That makes the foundation of total inorganic chemistry. And periodic table is nothing but a very, very systematic classification of all the present elements, that is 118 elements, in very, very systematic and conceptual manner. So as per my opinion, this is the greatest table in the world as a periodic table. It takes a lot of efforts to have this type of table. So jitne sare scientists ne efforts liya hai, be thankful to him because it's a very great creativity. टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही मजा और उतना ही खतरनाक पीरियोडिक टेबल हमारे लिए बनता जाता है, इतना मस्त बनता जाता है. सो मुझे लगता है कि उसी तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट इज हियर इन दिस पीरियोडिक टेबल. तो इस चैप्टर का कंटेंट है, we'll discuss the periodic table. Whichever scientist or whoever the scientist contributed here getting this model periodic table, so we'll have the introduction for all these scientists, their theories, their principles. Furthermore, the actual modern periodic table, how many vertical columns, how many horizontal rows, but the groups and periods are there, and on what basis that is classified, that is what is S block element, P block element, D block elements, and F block elements. ये हमें उसके अंदर डिस्कस करना है. और at the same time हमें डिस्कस करना है different trends in properties of these elements, है ना. बट मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे कल का याद आया. कल हम क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे, और हमने क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था, जो शायद कुछ बच्चों ने बोला था, उसको मैंने करेक्ट भी किया था. सो एज आई रिकॉल्ड इट, we'll have the electronic configuration of chromium and copper, and then we'll start with the chapter. So let's move to electronic configuration of chromium and copper. So पहला था हमारा chromium 24. So when we have this chromium 24, we have the electronic configuration that is 1s2, 2s2, 2p6. Then here is 3s2, 3p6, 4s2, and 3d4. This is the electronic configuration theoretically which is expected for this chromium. So chromium has 2, 2, 4, or a 16, 10, or a 10, 20, 20, or a 4, 24. So electronic configuration complete.
But this is a very theoretical electronic configuration of chromium. But when practically observe, we got next electronic configuration, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s1 and 3d5. This, observe this last electronic configuration. Rest electronic configuration is similar one. There is no change in rest electronic configuration. Bit change is there here in this last part. Theoretical electronic configuration is 4s2, 3d4, which is expected according to theoretical laws and norms and rules. But when chromium is practically observed, when the electronic configuration of chromium is practically observed, how is the electronic configuration of this chromium? Then this is the practically observed electronic configuration of chromium. It has 4s1, 3d5. This is the electronic configuration observed in chromium. Similar way, we have here copper 29. Copper 29 has the electronic configuration. Theoretical 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Then we can have your 4s2 and 3d9. This is the theoretical electronic configuration of copper. But the practically observed electronic configuration is, you can say, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s1 and 3d10. See the last electronic configuration. See the last electronic configuration. So we can have, this is the theoretical electronic configuration of copper expected. This is theoretical electronic configuration of chromium expected. But the practically observed electronic configuration for chromium is this, and practically observed electronic configuration of copper is this one. So अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो you have to write this electronic configuration. This is the right electronic configuration for chromium and copper. So जिसके अंदर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होना था, एक्चुअली 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो इसका मतलब क्या होता है? One of the electron from 4s jump to 3d. Here again, one of the electron for 4s jumps to 3d. ये होता है. And that's why यहाँ पे 3d9 के बदले 10 होता है और यहाँ पे 3d4 के बदले 5 होता है. इस तरीके का practical electronic configuration हम लोग को ऑब्जर्व होता है. Now what are the reasons behind this? So let's move to the reason with this one. आपको एग्जाम में जब पूछा जाएगा, again and I am saying this is the right electronic configuration and this electronic configuration is the wrong one. This is the wrong one. ये अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा. अगर आप ये लिखते हो तो आपको राइट मार्क्स मिलेंगे. 2 एलिमेंट है 30 के बिलो जिनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है. सवाल यह है कि इनका इस टाइप का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों मिलता है, क्या मिलता है? तो देखिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एन एम्प्टी ऑर्बिटल और एम्प्टी सेल. There is another concept called as a half filled, and there is another concept called as a full filled. Full filled orbital, full filled shell orbital. ये होता है. So अब देखिए, empty is also called as a partially filled. नहीं, ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे partially filled लेते हैं और empty लेते हैं. Partially filled. And here you can say empty orbital, partially filled orbital. ऐसा होता है. अब देखिए, when we talk about the shell subsets or orbitals, there can have the concept like empty orbital, there can have partially filled orbital, there can have filled, and there can have a full filled atomic orbital. अभी what is empty orbital? अगर हम देखते हैं S की बात करते हैं, S, P, D and F, these are the orbitals. अगर हमारे पास S में 0 इलेक्ट्रॉन है, that is empty. P में 0 इलेक्ट्रॉन है empty, D में 0 इलेक्ट्रॉन है empty, F में 0 इलेक्ट्रॉन है empty. So we have S, P, D, F subcells. अगर ये सारे subcells में 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब there is no electron, they called as empty orbitals or empty subcells. Clear with this? अगर अभी देखिए S का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, हम अच्छी तरह जानते हैं, कल देखा हमने. S का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है. अगर S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, this is called as a full filled orbital. S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, it is called as a full filled orbital. This is for the S. ये S के लिए. अभी देखिए, we can have for the P. We can have for the P. P के अंदर P का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है और उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, it is called as full filled. D का मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है, if it has 10 इलेक्ट्रॉन, it is called as full filled. F का मैक्सिमम कैपेसिटी 14 का है, then it is called as full filled. So अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके अंदर का, कि अगर S का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है और it has 2 इलेक्ट्रॉन्स,
filled in this, then that is called a fulfilled orbital. Fulfilled S subshell, fulfilled S orbital. If this P has maximum capacity of 6 and it has 6 electrons, then it is called as a fulfilled. D has 10 capacity and 10 are filled, it is called as a fulfilled. Or F has 14 capacity maximum, or if 14 are present, it is called as a fulfilled. So all these numbers indicates that cell subcell is fulfilled. अभी इनका आधा क्या होगा? 2 का आधा क्या होगा? You can say 1. 6 का आधा कितना होगा? 3. 10 का आधा कितना होगा? 5. और 14 का आधा होगा? 7. तो अगर किसी भी s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट इज कॉल्ड एज हाफ फील्ड. किसी भी p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज हाफ फील्ड. किसी भी d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन से, इट इज कॉल्ड एज हाफ फील्ड. और f में 7 इलेक्ट्रॉन से, दैट इज कॉल्ड एज हाफ फील्ड, क्योंकि 14 का आधा 7 होता है. दिस इज कॉल्ड एज हाफ फील्ड ऑर्बिटल. तो किसी भी सेल्स के ये हाफ फिगर्स होते हैं, मतलब उसके मतलब एस का, ये पी का, ये डी का और एफ का, दैट इज कॉल्ड एज हाफ फील्ड ऑर्बिटल. Rest all numbers are called as partially filled because empty is 0, fulfilled is these figures and half filled are this, and that's why remains now partially filled orbitals. तो अभी s के अंदर देखिएगा, ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं कि x के अंदर मैक्सिमम कितने होते हैं. s के अंदर मैक्सिमम 2 ही होते हैं, 1 या 2. तो पार्शियल फील्ड होता ही नहीं, तो उसके अंदर पार्शियल फील्ड कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं. p की बात करते हैं तो p के अंदर मैक्सिमम 6, हाफ 3 और 0. तो 1 2 ये दोनों है 3 के नीचे. 3 तो आ नहीं सकता, 3 इधर आता है. 4 और 5. तो अगर किसी भी p ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे कहा जाता है पार्शियली फील्ड. पार्शियली फील्ड. अभी देखिए कैसा ना कि मानो एक दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं इसके लिए, कि मानो हम लोग खाना खाते हैं, हम कोई बच्चा खाना खाता है, मानो किसी की भूख 2 रोटी की है, मतलब 2 रोटी खाएगा तो उसका पेट भर जाता है, एकदम फुल हो जाता है उसका पेट. 2 रोटी उसका कैपेसिटी है मैक्स. अगर उसको 2 रोटी मिल जाएंगे तो बोलेगा आई एम 100% फुलफिल्ड, बिकॉज मेरा 2 का कैपेसिटी है, मैंने 2 खा लिया. अगर 1 मिल गया तो बोलेंगे आधा ही हो गया, आधा ही हो गया. सो वी कैन से आधा. अगर हमें 1.5 चपाती मिल जाता है, 1.5 रोटी मिल जाता है या आधी रोटी मिल जाती है, दैट्स कॉल्ड पार्शियली फिल्ड, बिकॉज हमारा पेट पार्शियली फिल हो जाता है, उसके हिसाब से बोला जाता है. आप ऐसा भी बोल सकते हो आधे से ज्यादा, लेकिन ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज पार्शियली फिल्ड. तो अगर पूरा का पूरा है दैट इज हाफ फिल्ड, उसका आधा है तो कंप्लीटली आधा, और बाकी ऑल रेस्ट नंबर्स आर कॉल्ड एज पार्शियली फिल्ड. तो किसी भी p के अंदर 1 2 4 या 5 इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल फिल्ड. d के अंदर 10 होते हैं, 10 फुलफिल्ड है, 5 आधा है, और बाकी ऑल नंबर्स हैज टू बी कॉल्ड एज पार्शियल फिल्ड. क्या आएंगे? 1 2 3 4. उसके बाद 5 तो चला गया, 6 7 8 9. ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? पार्शियली फिल्ड. और f के बारे में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 इधर चला गया, तो 8 9 10 11 12 and 13. All these numbers are called as partially filled. तो किसी भी d ऑर्बिटल के अंदर 14 और 7 के सिवाय सारे के सारे कहा जाता है partially filled. किसी भी 10 के अंदर बोला जाता है 10 और 5 के, मतलब d के अंदर 10 और 5 के अलावा बोले जाते हैं partially filled. So this is what we have concept. और प्रैक्टिकली देखा जाता है तो a fulfilled orbital is most stable element. Fulfilled orbital किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिटल फुलफिल होता है, दैट इज कॉल्ड you can say मोस्ट स्टेबल एलिमेंट. फिर जिसका हाफ फिल होता है वो उससे कम स्टेबल होता है, और जिसका पार्शियली फिल होता है वो उससे भी कम स्टेबल होता है. सो दैट इज व्हाट दिस इज द स्टेबिलिटी. दिस इज द स्टेबिलिटी. any of the elements having fulfilled orbitals, all orbitals are filled, that element must be a stable element. Then उसके बाद आता है हाफ फिल. जिसके बाद आता है ये. So partially filled, then half filled is more stable than partially filled, and full filled is more stable than this one. तो अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पे देखते हैं 3D और 5, 3D 4 और 3D 5 है. D का कैपेसिटी 10 का होता है, और यहाँ पे 10 का 5 होता है, तो 5 के कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ता है. दिस इज अ पार्शियली फील्ड. 4 इधर देखिए, ये 4 जो है ना, D के अंदर का दिस 4 इज कॉल्ड एज पार्शियली फील्ड. ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है. सो क्रोमियम का 3D 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज यू कैन से partially filled orbital, which is least stable. And if one electron from 4s jumps to 3d, then it becomes most stable. यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है, वैसे भी इनके अंदर एनर्जी गैप बहुत कम होता है, so easily electron can jump from 4s to 3d, और 3d में 5 होता है. In order to attain the stability, one of the electron from 4s jumps to 3d, and that's why it becomes half filled, or half filled orbital is more stable than partially filled. And that's why electron jumps, and that's why this is the electronic configuration. Observe. So chromium is also a stable element in the nature. Same thing happens with copper. Copper has theoretical electronic configuration 4s to 3d 9.
3d9 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो 3d10 बनेगा. So one of the electron jumps from 4s to 3d and that's why here becomes, you can say 3d10. यहाँ पे 3d10 आ जाता है and that becomes completely fulfilled orbitals. Clear with this? So that is the figure what we get over here. इस तरीके से हम लोगों को मिल जाता है. That is 3d9. Clear about this? So that's why copper electronic configuration, which is practically observed, is 4s1 3d10, and this is in order to attain the stability. So one of the electron from 4s jumps to 3d and they attain the stability. किसी भी element का full filled orbital is more stable than the half filled than the partially filled. So this is less stable, this is comparatively more stable, and this is highly stable. So that is the electronic configuration, exceptionally what we get from all these elements. Clear with this? So that's all for the electronic configuration. जो कारण में छोड़ दिया था. So someone, that is Prashant, is asking that doesn't any other element show this property? 100% yes, Prashant. This is what I stated here. These two elements are below 30. There are 118 elements. Still there are some more elements. शायद अपने D block element periodic table के अंदर ही आपको पता चलेगा कि there is zinc, cadmium, ये कुछ element ऐसे जिन्हें D block नहीं कहा जाता है. क्यों नहीं कहा जाता है? Because they have same exceptional type of electronic configuration where electron jumps from lower orbital to higher orbital. मैंने कहा जिंक के बिलो ये दो एलिमेंट्स आते हैं, जिंक के आगे भी ऐसे कुछ एलिमेंट्स जरूर आते हैं जिनके पास इस तरह का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है. Clear with this? So that is the electronic configuration what we are here for this one. So everyone please keep it in mind. It's very important concept which is also useful in JEE or Neet. So हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक फंडामेंटल पार्ट माना जाता है, कहा जाता है. ठीक है ना. Let's move to this periodic table. अभी हमारा चैप्टर की बात करते हैं हम लोग. periodic table, modern periodic table. अब देखिए, as the name suggests, modern periodic table. वैसे भी आपका जनरेशन एक मॉडर्न जनरेशन है, तो आपको खुशी महसूस होती है because you are the next generation, you are the most modest generation, modern generation, no doubt at all. होना भी चाहिए, क्यों नहीं. लेकिन आपका कोई छोटा भाई घर में है तो ही इज मोर मॉडर्न देन यू. याद रखिएगा, अगर आपके बीच में 4-5 साल का अगर गैप है आपके छोटे भाई के अंदर, मतलब आपका कोई छोटा भाई या बहन है आपसे 5 साल से छोटा है, तो 100% देयर इज अ बिग जनरेशन गैप बिटवीन यू एंड ही. हो सकता है आगे 4-5 साल के बाद आगे आपको समझ में आएगा कि आप जब ग्रेजुएशन खत्म करेंगे तो आपका भाई कॉलेज में आ जाएगा तो आपको पता चलेगा ही इज मोर मॉडर्न देन यू. इट ऑलवेज हैपेंस, देयर इज अ जनरेशन गैप एंड यंगर जनरेशन ऑलवेज कम्स अहेड एंड दैट टेक्स द प्लेस. सो उस हिसाब से मॉडर्न. मॉडर्न शब्द का मतलब ये है कि हमेशा बदलने वाला, नए सरे के साथ चलने वाला, मतलब whatever the latest is there वो एक्सेप्ट करने वाला, ऐसा उसका मीनिंग है. और ये यहाँ पे लाने की जो कारण ऐसा है, इस चैप्टर में जो हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे वो टेबल ऐसा नहीं किसी एक साइंटिस्ट ने दिया था, वो आज भी वैसा ही है. दिस इज द टेबल which is modified many times and will be modified in future many times. So this table is always open to modify. So we can modernize this one. अगर आप में से भी कोई कुछ खास नया कॉन्सेप्ट रखता है और इसके अंदर भी कुछ लूपहोल ढूंढ निकालता है, तो you have the chance to modify this modern periodic table. You have the chance to modify this periodic table, and that's why the modern word is put in this one, because it is always latest additions can be done, and that's why it is called modern. Periodic मतलब again after certain interval, coming again and again after certain, repeating again and again after certain interval. हर 24 आवर के बाद सनराइज होता है, सनसेट होता है, आप जानते हो. एवरी डे आफ्टर 24 आवर्स देयर मे बी अ माइन्यूट डिफरेंस ऑफ सम मिनट्स और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और सेकंड्स, बट एक 24 आवर इज अ पीरियोडिक टाइम. वही प्रोसेस रिपीट होता है. हर दिन सूरज उगता है, हर दिन वो सनसेट के लिए चला जाता है. सनराइज सनसेट हर दिन होता है. इट्स अ पीरियोडिक एक्टिविटी. हर महीने के बाद एक महीना बदलता है, एक नया महीना. हर 30 दिन के बाद, 31 दिन के बाद, कभी-कभी 29 28 डेज के बाद महीना बदलता है. एक साल के बाद पूरा साल बदलता है. नया साल अभी हाल ही में हमने उसको वेलकम किया. तो साल बदलना एक पीरियोडिक एक्टिविटी है, और साल बदलना पीरियोडिक इसलिए माना जाता है बिकॉज अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन revolution around the sun, and that is nothing but the 1 year. Earth completes one rotation around its own axis, that is nothing but you can say 24 hours. तो टाइम फैक्टर आप जानते हो कि 24 आवर्स क्यों है, 25 क्यों नहीं है, 23 क्यों नहीं है. एक साल में 365 डेज प्लस माइनस जो होता है लीप ईयर के बाद वो छोड़ेंगे तो 365 डेज ही क्यों होते हैं. या कोई अच्छा लकी नंबर था, किसी को जो अच्छा लगा 24 तो 24 आवर्स मान लेते हैं. 365 इट्स अ साइंटिफिक समझते हैं.
तो पीरियोडिकली जिस तरीके से अर्थ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 24 आवर में, जिस तरीके से एक साल में हमारी अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व होती है, ये जिस तरीके से पीरियोडिक है, उसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टी, कुछ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी पीरियोडिक टाइम में वापस वही आते हैं, उसी टाइप के आते हैं। दैट्स व्हाई दिस पीरियोडिक, बार बार उसी टाइप का आने वाला ट्रेंड, उसे पीरियोडिक कहा जाता है। मतलब हर टाइम वो एक्टिविटी रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। एंड टेबल मतलब टेबल, अभी टेबल माने तो हमें स्कूल के टेबल याद आते हैं, दैट इज मैथमेटिकल, बट यहाँ पे टेबल मतलब वेयर all elements are systematically classified. That form is nothing but the table. So that's why the name is given, that is modern periodic table. With this, we have to discuss here what is this modern periodic table. Okay. Now, let me clear one thing. That is, when we talk about this modern periodic table, we have to discuss. There are many scientists who try to classify all the elements in periodic table. Okay. Journey has been started somewhere in 17th, 18th century या उससे पहले भी साइंस का जर्नी, क्योंकि इंसान चीज ही बहुत खतरनाक है। और मुझे इंसान के ब्रेन मतलब इट्स वेरी अमेजिंग क्रिएटिविटी, ब्रेन सरप्राइजिंग होता है, क्रिएटिविटी होता है, हर इंसान का थिंकिंग बहुत डिफरेंट होता है। दो हमें जैसे दिखने वाले लोग होते हैं, लेकिन थिंकिंग अलग होता है, क्रिएटिविटी अलग होती है, सवाल अलग आते हैं, और इंसान के दिमाग में सवाल आते हैं, उस सवाल का आंसर ढूंढने की इंसान कोशिश करता है, और उसी कोशिश में कुछ ना कुछ नया ढूंढता है। So there are 118 elements which were discovered during this, मतलब till date, which were discovered during this journey of the science, right from whatever period, हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि in the early of 19th century, early of 19th century, there were 30 elements. Then the period of 1865, at the time of Mendeleev, there were 64, 63 elements. तो ऐसा नंबर एलिमेंट्स का ढूंढते चले गए, सारे एलिमेंट्स हमारे सामने आ चुके हैं। आज की तारीख में हमारे पास 118 एलिमेंट्स है जो एग्रीड है, और 6 एलिमेंट्स अभी भी 6 to 7 एलिमेंट्स वेटिंग में है। साइंटिस्ट ने प्रपोजल रखा है कि एलिमेंट हमने ढूंढे हैं, लेकिन नॉट बीन एग्रीड बाय द साइंटिस्ट कम्युनिटी। वो लेते तो नंबर हैज 126, अपडेटेड नंबर हैज गॉन अप टू 126, प्लस माइनस में भी एक दो, बट इतना नंबर है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो एग्रीड एलिमेंट है वो 180 एलिमेंट्स है। एवरी एलिमेंट हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, total different properties. So it is simply impossible for any of the human being, it is simply impossible for any of the human being to recall, remember all the element at a time. सारे एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज, there are lots of properties हर एक एलिमेंट्स के। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि there are 118 elements out of carbon is one of the element, carbon which is denoted by C40 है ना, C6 या फिर C12, C13 and C14, these are the elements of carbon. कार्बन नाम का एक एलिमेंट 118 एलिमेंट से एक अकेला, और ये अकेला एलिमेंट एक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करता है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारे यहाँ पे कुछ दोस्त, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्त लगता है ना, रिएक्शन में क्या हालात होते हैं वो हम अच्छी तरह जानते हैं वहाँ पे, है ना। रिएक्शन में लिखते समय लगता है अरे समझा, लगता है नहीं कुछ तो गलत है, कुछ तो राइट है, कुछ तो गलत है, समझा नहीं समझा, लिखता हूँ, like that. There may be a bit confusion, there may be a lot of confusion, or there may be a confidence within you, you can write this reactions well. But कार्बन एक अकेला एलिमेंट आउट ऑफ दिस 100 एलिमेंट जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करता है। और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, फिर भी सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। 118 एलिमेंट्स की बात ही अलग है। So that's why simply we can say it very well. Every element has different physical properties, every element different chemical properties, and there are many properties. So that's why it's become simply difficult for any of the individual to remember, recall all the elements and all the properties at a time. So that's why it was a need of time. It was a necessity of time. We should have a systematic classification of these elements in periodic table. So scientists came ahead, many scientists took initiative, and they tried to find out a way to represent, put all these elements in a proper table, proper way. So in earlier period, when in the early of 19th century, when 19th century started in early, at that time, whatever the elements were there, they were elements, these elements were classified only as metals, non-metals, and metalloids. That was a this big general superficial classification of the elements only. There are metals, there are non-metals, and there are metalloids. So ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि metals, non-metals, and metalloids. This is the general classification. That was the general classification. That is the general classification. था, आज भी है, but starting में सिर्फ इतना ही किया गया। बाद में काफी सारे साइंटिस्ट आगे आते हैं। उसमें से कुछ साइंटिस्ट ऐसे जिसका नाम डोबेराइनर साइंटिस्ट है, ट्रॉट नाम का साइंटिस्ट है, डोबेराइनर है, फिर न्यूलैंड है, न्यूलैंड के बाद फिर ये मेंडलीव आता है, मोस्टली आता है, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया। तो आपने
स्कूल ऑफ एलिमेंट 10 पे जो था 10 पे देखा था, उसके अंदर आपने डोबेराइनर ट्राइड्स देखा था, जिसने एलिमेंट्स 3 के ग्रुप में क्लासिफाई किए थे डोबेराइनर, और उसने बताया था कि मिडिल एलिमेंट हैज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ रेस्ट ऑफ द 2 एलिमेंट्स, सो ही क्लासिफाइड ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3। तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप उसने किया था, जैसे स्कूल में हम लोग ग्रुप करते हैं दोस्तों का, उसी तरीके से उसने प्रॉपर्टीज के आधार पर कौन सी प्रॉपर्टी, द मिडिल एलिमेंट हैज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर 2, उस आधार पर उसने क्लासिफाई किया था। सो दैट वाज, यू कैन से, डोबेराइनर। फिर उसके बाद ब्रॉट आता है। ब्रॉट्स की यूनिट थ्योरी का कहना ये था कि whatever the atomic mass of the particles is, that is nothing but in whole numbers. ये ब्रॉट नाम के साइंटिस्ट का कहना था, and every particle has the unitary mass, and that unitary particles comes together. पर बाद में पता चला भी unitary mass हमको ज्यादा जरूरत नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ इसके अंदर। बाद में कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनका मास फ्रैक्शन में आता है। तो फ्रैक्शन में कैसे मास आता है? जब यूनिटरी थ्योरी के हिसाब से यूनिट मास होता है हर पार्टिकल का, तो 4 पार्टिकल आएंगे तो मास 4 होगा, 10 पार्टिकल आएंगे तो मास 10 होगा। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे मिले जिनका मास 10.4 था, तो 10.4 आएगा कैसे? जैसे हम लोग दुकान में जाके 4.5 अंडा नहीं लेके आ सकते, हम या तो 4 अंडे लेके आ सकते हैं या तो 5 अंडे लेके, दुकानदार बोलेगा आधा मेरी तरफ से लेके जाए भाई, बट हम लोग आपको 4.5 अंडा नहीं दे सकते। जिस तरीके से उसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता, उस तरीके से यहाँ पे प्लॉट्स थ्योरी के हिसाब से पार्टिकल का फ्रैक्शन नहीं हो सकता था, लेकिन बाद की थ्योरी ने रिवील कर दिया कि प्लॉट वाज रॉन्ग एंड पार्टिकल्स के फ्रैक्शंस में मासेस होते हैं। न्यूलैंड आता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। जैसे कि तुम में से कुछ लोग म्यूजिक जानते होंगे, तो वो सारे ग म प ध नि सा होता है, सो सारे ग म प ध नि सा, पहले भी सा है बाद में भी सा है, दोनों का भी ये वोकल कॉर्ड या सुर जो भी है वो सिमिलर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो वो सुर है ना, सप्त सुर जैसे कहा जाता है, उसके बाद वापस लास्ट वाला सुर पहले जैसा होता है, मतलब आफ्टर 7 8 हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक फर्स्ट वन, एंड दिस इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव इज अ म्यूजिकल पैड, जो हम लोग कीबोर्ड कहते हैं उसे, या पीटी कहते हैं, हारमोनियम कहते हैं, उसके अंदर तो सारे ग म प ध नि सा करेंगे तो वापस 8 हैज द सिमिलर साउंड लाइक फर्स्ट वन। सो यहाँ पे साइंटिस्ट को ऐसा मिला कि व्हेन एलिमेंट्स आर पुट अकॉर्डिंग टू देयर increasing order of properties or whatever the properties, every 8th element has the same property as like first one, and that is called the Newton's law of octaves। ये भी आ जाता है। ऐसे कई सारे साइंटिस्ट थे इन बिटवीन जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर दो साइंटिस्ट बहुत ही नोटेबल है, दो साइंटिस्ट बहुत ही नोटेबल है। उसमें से पहला साइंटिस्ट है मेंडेलीव्स और दूसरा साइंटिस्ट है दैट इज नथिंग बट मोसले, और दोनों ने कुछ अलग और खास थ्योरी हमारे सामने रखी है। I would like to have the screen share, just a second, hold on for few seconds. Okay. Are you getting the screen share? Hope you are getting screen share on your screen. So just check it. Yes. ये जो स्क्रीन पे अब देखिए, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखते हैं, यू कैन से, तो डोबेराइनर ट्रैक्ट्स मैंने बता दिया आपको, न्यूलैंड्स के लॉज ऑफ ऑक्टेव्स बताया मैंने, प्लॉट्स यूनिटरी थ्योरी बताया मैंने, मेंडेलीव एंड मोसले, दीस आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, सो जिन्होंने कुछ अपनी थ्योरी रखी है। तो सबसे पहले मेंडेलीव आता है। मेंडेलीव इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु पुट फोर्थ हिज थ्योरी, मेंडेलीव इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु पुट फोर्थ हिज थ्योरी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन द लॉ। बाकी सारे साइंटिस्ट ने जस्ट प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट क्लासिफाई किए थे, लेकिन मेंडेलीव एक दिमित्रो मेंडेलीव एक रशियन साइंटिस्ट है, ये पहला साइंटिस्ट है जिसने लॉ के आधार पर क्लासिफिकेशन किया, और उसका लॉ आप जानते हो। इज देयर एनीवन नोस द लॉ? प्लीज लेट मी नो। कोई जानता है व्हाट इज द मेंडेलीव्स लॉ? मैंने तो स्क्रीन पे दिया है, लेकिन फिर भी तुम में से कुछ लोग होंगे जिनका लर्न होगा। Yes, sir. Yes, बोलो। Properties of elements are periodic functions of their atomic masses. Very good, very good. So see now, इसका मतलब ये है, मतलब आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब ये लॉ तो बहुत सिंपल है, लर्न करके आप एग्जाम में रख सकते हो, जैसे कि बहुत इजी है, आप स्कूल में भी लर्न किए हो, लेकिन उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये है, हर एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, दीज प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड, दीज प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, एंड दैट इज पीरियोडिकल। सर्टेन समय के बाद वापस वही प्रॉपर्टीज रिपीट होते हैं,
और किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास के कारण होते हैं, ऐसा उसका मतलब आता है। मतलब whatever the property, जो भी प्रॉपर्टी वो एलिमेंट दिखाता है, चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है, प्रॉपर्टीज वो डिसाइडेड होते हैं, डिटरमाइन होते हैं एटॉमिक मासेस के कारण। इसका मतलब है कि एटॉमिक मास के बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ऐसा मेंडलीव का कहना था। सो मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने बताया एटॉमिक मास इज अ वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एंड दैट्स व्हाई the physical and chemical property of the element depends upon this atomic mass and hence they are periodically repeated even, मतलब so that is what we can say. So ये law एग्जाम में आ सकता है, ये law learn करें और बाकी भी कुछ सारी चीजें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. So मेंडलीव का law ये आपको याद रखना है, that is physical and chemical properties of the element are periodic functions of their atomic masses. ये था मेंडलीव लॉ. अभी मेंडलीव के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि मेंडलीव ने क्या किया था ना कि उसके पीरियड में जितने सारे एलिमेंट प्रेजेंट थे, दैट इज 63 64 एलिमेंट्स प्रेजेंट, वो सबको उसने टेबल फॉर्म में क्लासिफाई किया था. He arranged all the elements according to their increasing order. He arranged all the elements according to the increasing order of atomic mass, increasing order of atomic mass. ऐसा उसने रखा था, ठीक है. So now the thing is that वो सारे एलिमेंट्स उसने according to उसके increasing order रखा था. Then he found that every eighth element has the same property like first one, as like the octaves and all. So he classified all the periodic table, all the elements in periodic table. Or because of the law, अब देखिए that classification was not based on the properties, not based on the legs and everything. That classification was based on the law, and that's why he left some empty spaces in periodic table. 63, 64 elements present थे, लेकिन periodic table के अंदर कुछ empty spaces उसने छोड़े थे, और उसने कहा these elements are present in the nature. He predicted these elements are present in the nature, and we have to discover that. See the confidence based on the law. एक साइंटिस्ट जब लॉ रखता है, लॉ का कॉन्फिडेंस देखिए क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट का कॉन्फिडेंस क्या होता है. कि हम लोग क्या करते हैं ना, जस्ट लर्निंग बेसिस पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखते हैं, लेकिन लॉ की एक बात खास अलग होती है. व्हाट ही स्टेटेड दैट, याद रखिएगा कि देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द नेचर, येट दे हैव टू डिस्कवर, उन्हें अभी डिस्कवर करना बाकी है. And after his death, these elements were discovered and they were having exact place in the periodic table of Mendeleev. So this kind of great scientists were there. Because of based on the law, they predicted 100% sure there are some elements in the nature, yet we have to discover them. Other scientists discovered them afterwards, and they were having a perfect place in the periodic table. जिनके नाम भी जानते हो आप लोग, एक aluminum का silicon like this. These were the elements which were discovered afterwards, and they were having the perfect place in the periodic table. This is called Mendeleev's law. Mendeleev's law के अंदर कुछ loophole भी जरूर थे. मतलब जैसे कुछ प्लस पॉइंट थे, वैसे कुछ लूपहोल्स भी थे. मेंडलीव ने बेसिक जो लॉ दिया था ये तो था, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, नो डाउट. बट एट द सेम टाइम he arranged all the elements according to their increasing atomic mass. Afterwards it is found that so there will a gradually increase in atomic mass, but some elements were found having lower atomic mass were put first, and higher atomic mass were put first and lower atomic mass elements were put afterwards. ऐसी कुछ irregularity उसके अंदर मिली, ऐसे कुछ loophole भी उसके अंदर थे मेंडलीव के अंदर. So that's why मेंडलीव थ्योरी के अंदर ये loopholes भी थे, and that's why we have to move for the next theory. And next theory is nothing but you can say given by मोस्ले नाम साइंटिस्ट. तो मोस्ले नाम का एक साइंटिस्ट पैरेलली उस टाइम काम कर रहा था, और मोस्ले नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया उस टाइम देखिएगा. मोस्ले नाम का साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर रहा था रेडिएशंस का मतलब जो कैथोड रेज होते हैं, कैथोड रेज उसने मेटल प्लेट्स के ऊपर बम्बार्ड किए थे. कैथोड रेज मेटल प्लेट्स के ऊपर बम्बार्ड किए थे, और वहां से कुछ रेडिएशन इमिट किए थे जिसे एक्सरेज कहा जाता है. और सारे मेटल का एक्सरेज का स्टडी किया उसने, और सारे मेटल के एक्सरेज का स्टडी करने के बाद he found that square root of frequency of this X-rays is directly proportional to a specific integer. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, that is you can see here. So what is stated that, so he studied that is X-rays. देखिए cathode rays जो है, so these are cathode rays, they were allowed to strike on the metal plate. So this is metal plate, and here some X-rays are emitted, and he studied these X-rays. ये X-rays आता है. cathode rays जब metal plate के ऊपर बम्बार्ड किए जाते हैं तो वहां से X-rays emit होते हैं. This is the X-ray. He studied X-ray, and he found that the square root of frequency of this X-rays is directly proportional to specific integer Z, specific integer. तो हम जब आयरन लेते हैं तो आयरन का Z अलग है, हम जब एल्यूमिनियम लेते हैं तो एल्यूमिनियम का Z अलग है, हम जब कॉपर लेते हैं तो उसका Z अलग है. Z कुछ तो एक खास प्रॉपर्टी है, Z कुछ तो खास प्रॉपर्टी है जो Fe के लिए फिक्स आता है वैल्यू, मतलब Z की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है जो Fe के लिए फिक्स आती है, एल्यूमिनियम के लिए फिक्स आती है, कॉपर के लिए फिक्स आती है. So he got for aluminum that is you can say 30.
एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू 30 आ रही थी, तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एल्यूमिनियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 13, ऐसा कुछ तो फिगर उसको मिल रहा था आफ्टर कैलकुलेशन. So he thought that this Z, which is a specific integer, and that must be a very, very fundamental property related with this element. And he named this nothing but the atomic number. He named this atomic number. So Mendeleev और Mosley में difference बस एक बात का है. Mendeleev को लगा कि atomic mass is a very, very fundamental property, and Mosley को लगा कि that is atomic number is a fundamental property. Once again, Mendeleev thought that atomic mass is a very fundamental property, so he classified elements based on the atomic mass. On the other hand, this Mosley found that atomic number is a very, very fundamental property, so he classified element on the basis of atomic number. बाकी rest almost similar चीजें थी, so उसमें कोई बदलाव और कोई change नहीं था. So we can have this law again. So this law is there on your screen, you can see here. So this is nothing but you can say physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic number. So this is nothing but you can say Mosley's law. Clear with this? So Mosley, on the other hand, opposite to Mendeleev, considered atomic number as a fundamental property, and according to him, the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of atomic number. So Mosley says atomic number, or Mendeleev says atomic mass. That was the big difference both of them. And both classified on their own basis, own theory. And finally, till date, it is very clear that the Mosley has given a very, very right law, right concept. So today's modern periodic table is based on Mosley's principle, Mosley's law. And that's why he classified all the elements in periodic table, but this periodic table is timely updated and added by a number of scientists here in this world. And that's why there's called a modern periodic table. So whatever the periodic table we use today, that periodic table is nothing but given by basically Mosley, and that periodic table is updated timely by number of scientists. That's called a modern periodic table. So today we have a discussion regarding this one. We had discussion regarding this one. I got the message. Properties of elements are the periodic functions of atomic masses. Yes, isotopes were having no place in table. Yes, no doubt, Prashant. You're right. So thank you for your interaction in your this text. So that's it. So in today's lecture, what we have discussed two important laws. और दोनों law में से एक law आपको exam में आना ही आना है. आपको या तो Mendeleev law लिखना पड़ता है या Mosley's law लिखना पड़ता है. ये दोनों law याद रखिएगा. दोनों law हमने देखे हैं, उनके loopholes और additions देखे हैं. कल के lecture में actually we'll discuss the periodic table. Till then, thank you very much. See you tomorrow. Thank you very much. Bye bye. Yes, welcome, Prashant.